he had a gallaging fracture. So the challenge was the patient presented with significant surgical burden and the major long bone fracture concurrent with the complex forearm fracture and dislocation, which we call the gallaging fracture and dislocation. And this is the X-ray of the femur, the sharp femur, mid-third fracture of a 17-year-old gentleman, and the forearm gallaging fracture, severely displaced fracture. Inner canal, it was narrow, so the nailing was difficult. The standard treatment is nailing, and ideal treatment for this gallaging fracture is the plating. But I opted nailing, although it was difficult nailing in the both fracture and the slight distraction, the tense nailing for gallaging fracture. And this is not reported in any literature for such a severely displaced fracture. The tense nailing should be considered. In fact, there is no literature present for the tense nailing for this type of gallaging fracture. So we did for the minimally, because it is minimally invasive, and periosteal and endosteal blood supply are maintained in both fracture, and the interlocking nailing was done in the sharp femur, and only 9 millimeter nail could be negotiated because the narrow medullary canal. So there is slight distraction, as you can see in this picture, but we did locking. It was difficult nailing. So the goal was to provide sufficient stability for early mobilization despite of an anatomical constraint, and implant was 9 millimeter nail, and technique was minimally invasive. And whereas in this left radius, the gallaging fracture, we did tense nailing. In this case also, the 2 millimeter tense nail was used. Usually you use a 2.5 millimeter tense nail, but we use 2 millimeter tense nail. Still there is distraction at the fracture site. So this was the problem with this due to the narrow canal. But this is the 6-month follow-up. You can see I sent this X-ray in Indian Orthopedic Research Group, IORG, and they told to revise this case, bone grafting and plating for gallaging fracture. So, but I left it and wait for, this is the 8-month follow-up. Still there was better union than 6 months, but this was not hypertrophic, and this is 11 months. You can see. So after waiting 11 months, the union is complete in both the fracture. The secondary colors have been formed. It was not hypertrophic non-union. It was the union, secondary union was taking place, although it was delayed union. But this is the functional result. You can see that supination, pronation, and wrist movement, flexion and extension all are present. And the tense nailing is provides sufficient stability for secondary union even in length critical fractures, because the narrow canal and the length should be maintained to, and DR, UJ should be reduced properly. We followed the throughout the 11 months for this maintenance of the length and DR maintenance. And advantages of this minimally invasive approach for gallaging fracture and femur is minimally invasive and reduce operative time and significantly minimize minimum blood loss, and with the conclusion that the TENS is viable, effective alternative for plating for the complex forearm injury. The successful management of this double
fractures case confirmed that interlocking knelling of femur and tense ends higher union rates and excellent functional outcomes. This approach should be considered for Gallagher fracture in adult after further studies, because I think this is the first case in severe Gallagher fracture. I did tense. So this case was published in International Journal of Orthopedic Sciences. The traditional teaching that the 99.99% of these cases unites without any significant deformity and without any significant functional impairment. But later on, it was found that there are severely displaced fractures, severely comminuted fractures. About 15% of cases require surgical treatment either in the form of tense nailing or the internal open reduction and internal fixation with plating. So let us come to our main topic, that is tense nailing. Unlike conservative management, it provides stable fixation and early mobilization and reduces the risk of non-union and malunion. Tense is less invasive, resulting in a smaller incision, reduced soft tissue damage, and fewer potential complications, making it an attractive option for managing displaced fracture of the clavicle. So we conducted a study between March 2022 to March 2025 on 25 cases of clavicle fracture, mid-third fracture, all were simple displaced fracture according to AO classification 15B1 and 15B2. The age of the patient was 16 to 48 years. No comorbidity was found in our study group. So all patients treated by titanium elastic nailing in my hospital. So the mode of trauma, road traffic accident was the main mode of the trauma, whereas fall from height and fall on out-the-state side was the other mode of the trauma. So these are the typical mode of injury, the fall on the shoulder to protect the head injury in the road traffic accident. This picture is taken from AI, and this is a typical clinical presentation, a bump at the site of the fracture, and the skin appears as if the fragment will penetrate the skin, and this is the radiological typical presentation, more than 2.5 centimeter displacement, and the jet type of cognition are the radiological indications for the surgical treatment, either in the form of tense or internal fixation with the plate and a screw. So these are the already explained. The simple fracture we have taken into consideration. Displaced simple fractures are spiral or oblique or transverse or short oblique, 15B1 and B2. The patient lies supine if you are affected, lip elevated, and the arm are hanging outside the table, so that we can facilitate the abduction and external rotation at the shoulder to facilitate the reduction of the fracture by closed width. The incision is small incision and a transverse or longitudinal incision about 1 to 1.5 centimeters. Just lightened to the sternoclavicular joint is given, and after making an incision, we make a hole with the help of drill bit, and then we make this hole continuous with the intramedullary canal of the clavicle. But this is very, very crucial step. One should take his own time and use tips and tricks to do this step, because the heart and lung, like vital structures, are waiting for an instrument to escape. So after making the hole, we did tense nailing after close reduction or mini incision reduction. So the immediate post of pain management and immobilization, at the 2 weeks we did suture removal, at 6 weeks radiographic assessment of the fracture area, and 12 weeks the functional assessment, and if required the implant removal was done. And the operative time was 30 to 60 minutes, whereas fluoroscopic time was 10 to 30 seconds, and the blood loss was 20 to 50 ml in all our cases. So the excellent result in 76% of cases, whereas 16% cases were good results, and fair and poor results were 4% each in our study group. The complications are nail bypass, superficial infection, and the malunion, each were 4%, whereas hardware irritation was 8% in our study group. And these are the few cases. You can see that 15B1 fracture treated by titanium elastic nailing, beautiful surgery without use of any instrument. The reduction has been done over this
by shoulder movement, external rotation and abduction, and with the help of the thumb and index finger. The beautiful surgery. And this is another case, yet another case of 15D1 fracture treated by titanium elastic nailing. Yet another case of 15D1 fracture treated by titanium elastic nailing. These are the 15B2 fracture. This is 15B3 fracture treated by titanium elastic nailing. Ideally, it should be treated by open reduction and internal fixation, but we did tense nailing, and you can see the 6-month follow-up, the beautiful radiological union. And this is the functional result. You can see so the time is less. So the limitation of this surgery is a small number of cases included in this case, in this study. So the short follow-up period and retrospective design. So a study with large number of population and long duration of follow-up, and prospective study is required to establish this modality of treatment as an attractive option for the treatment of displaced fracture of the take-home message is tense nailing is effective for the clinical fracture with good to excellent outcomes, minimum complication if the patients are selected properly and the technique is performed properly. The further study are needed to confirm the long-term efficacy of this. This work published in International Journal of Orthopedic Science. छपरा के डॉक्टर आरसी ठाकुर ने हड्डी फ्रैक्चर के इलाज में क्रांतिकारी तकनीक विकसित कर देश भर में पहचान बनाई है। उनकी तकनीक से 35 लाख रुपए तक का महंगा इलाज मात्र 35,000 में संभव हो सका है। ऑर्थो सर्जरी में योगदान के लिए गुवाहाटी में आयोजित इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि छपरा, सारण और बिहार के लिए गर्व की बात है। इनोवेशन अवार्ड इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया है, जो कि गुवाहाटी IOACON 25 में दिया गया है। और यह अवार्ड पूरा भारतवर्ष में 3 ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिला है, जिसमें बिहार से मेरा ही नाम है। अतः से छपरा जिला में जिला का कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन या बिहार का कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन को पहले बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें मेरा नाम आया है। Hello friends, today I am going to give a demo of interlocking nailing in fractured shaft femur lower third in a 72-year-old female. This patient sustained this injury due to fall on the ground. Usually this fracture occurs due to high velocity trauma in young adults, either due to road traffic accident or fall from height. But in old age, this may happen in a trivial trauma due to fall on the ground. So let us come to the demo of this surgery. This is the X-ray of the same patient having lower third short oblique type of fracture of the shaft femur. As you can see, in the other limb, the patient has been operated, that is interlocking nailing has been done 4 years back for the fracture of the shaft femur. So this time the patient had come to me for the lower third fracture of the shaft femur or other limb. So let us come to the surgery. First of all, I will make an incision just above the greater trochanter, about 2 to 2.5 centimeter diameter, and then
introducing a bone out just medial to the greater trochanter in the piriform fossa in AP view. As you can see in the CR picture, and in lateral view, it is at the junction of the anterior 2/3 and posterior 1/3 of the greater trochanter. As you can see in the CR picture, I am having the bone out inside the intramedullary canal so that it can enter in selected exact entry point. And this is the lateral view. You can see that it is at the junction of the anterior 2/3 and posterior 1/3. You can see in the picture and epi view, this is the lateral view, this is the epi view, and this is the lateral view. Again, I have focused to confirm the entry point. And finally, after confirming in the CR picture the correct entry point, I am introducing by a screen movement of the CR, and you can see that this is the AP view. It has gone in correct position, and in lateral view also it has gone in correct position. That is at the point of the anterior 2/3, at the junction of the anterior 2/3 and posterior 1/3 of the greater trochanter. So after confirming it, I am going to introduce still I am introducing the bone out inside the intramedullary canal, and finally a 2.5 millimeter guide wire is being introduced inside the intramedullary canal, just lateral to the bone out, which has been pulled out to make an space in the lateral part of the bone out to introduce the guide wire. And finally, after introducing the guide wire, we removed this bone out, and then after reduction of the fracture with the help of the F tools, my assistant is holding this fracture in proper position, and the guide wire has been introduced in the distal fragment. And after introduction of the guide wire, we are going to ream and I am doing reaming with a 10 millimeter reamer, and still my assistant is keeping millimeter because the patient is old one, so reaming is easy. It is just to measure the size of the intramedullary canal, the diameter of the intramedullary canal, so what size of the nail should be introduced so that it can fit in the intramedullary canal. The fitting nail can be introduced. So this is the purpose of reading, because the patient is old one osteoporotic, so
throughout the training process, reading process, and learning process, the fracture is kept in reduced position by my assistant, and the fracture has been linked up to the upper end of the patella, as you can see in the CR picture. You can see in the CR picture. It is reduced, although there is slightly distracted, but in reduced position. And finally, it has reached up to the lower end of the femur. And now I am measuring the size of the nail with the help of the CR. And after selecting the proper size of the nail, I have mounted a 10 millimeter, a 11 millimeter, sorry, 11 millimeter nail on cheek, and finally I am hammering the nail inside the intramedullary canal and keeping the fracture in reduced position with the help of my assistant, so that the malalignment can be prevented. And finally, I have introduced the appropriate size nail up to the upper core of the patella. Good position, the fracture is reduced in both view, in the oblique view and lefty view and lateral view. And then I will remove the guide wire before proximal locking, and now I am doing proximal locking after removal of the guide wire. So you must keep in mind that before locking you have to remove the guide wire. And I am doing proximal locking. The proximal hole in the proximal fragment near cortex is perforated with the help of 2.5 millimeter K wire, and the distant cortex is drilled with 3.2 millimeter drill bit, and finally we select a proper size 5 millimeter screw for proximal locking, and I am still making a hole in the
distal fragment, distal cortex, and now I am tightening the screw, the second screw in the proximal fragment. And you can see in the CR picture, the proper size screw has been tightened in proper position, and it is confirmed that it is inside the hole in both anti and lateral view. And now I will do the distal locking. Then it should be, but it was accepted because the effect of anesthesia was wearing off. So it was accepted, and you can see that both in anti and lateral view, both proximal as well as the distal screw are in place. Next surgery. Thank you. Hello friends, I am Dr. RCT Ortho, orthopedic surgeon, Chhapra, Bihar. Hi friends, today I will discuss more about the orthopedic implants. Just to recapitulate the whole thing that in 1939 and 40 the KNL का आविष्कार हुआ और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसका उपयोग हुआ, और उसके बाद 1950 में रस ब्रदर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया उन्होंने आविष्कार किया और इसको बोथ बोन फोर आर्म फ्रैक्चर में उपयोग किया गया। उसके बाद इंटरलॉकिंग का जमाना आया और इंट्रापर्टनर रूप से इंटरलॉकिंग शुरू हुआ, जिसे केम्प ने पॉपुलराइज किया 1970 में। और उसके बाद इंट्रापर्टनर रूप के बाद जो बीच में प्लेटिंग का दौर आया, जिसमें शुरुआत में हेवी ड्यूटी प्लेट का यूज किया गया, फिर डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट को यूज किया गया, फिर लो कॉन्टैक्ट LCDCP का यूज किया गया। उसके बाद एडवांस इंटरलॉकिंग करने जमाना आया। पहले इंटरलॉकिंग यानी केवल डायफिशियल फ्रैक्चर में यूज होता था, फीमर का हो चाहे टीबिया का हो चाहे ह्यूमरस का हो, लेकिन बाद में मेटाफिशियल फ्रैक्चर के लिए भी एडवांस इंटरलॉकिंग शुरू हुआ, जैसे कि लोअर एंड ऑफ द फीमर एंड upper end of the upper third of the femur, subtrochanteric fracture and supracondylar fracture के लिए DFN, supracondylar fracture के लिए DFN और subtrochanteric fracture और trochanteric fracture के लिए PFN यूज होने लगा। फिर PFN A आया ऑस्टियोपोरोटिक बोन के लिए, PFN A2 आया जिसको यूज होने लगा आजकल ऑस्टियोपोरोटिक बोन का। ओल्ड ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट में PFN A2 ही यूज करते हैं। और मेटलर्जी के बारे में शुरू में स्टील का उपयोग हुआ, जो ये तो बहुत स्टीपर होता है, about 10 times स्टीपर देन द कॉर्टिकल बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो ये लोड बियरिंग हो जाता है और लोड शेयर नहीं करता है ह्यूमन बॉडी से। तो कैलस जो बनता है उसमें लीफ बनता है। इसके बाद आया टाइटेनियम नेल्स, जो नेल्स बनते हैं वो टाइटेनियम एलॉयज के बनते हैं और उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है कॉर्टिकल बोन के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इस तरह से उसको एलॉय बनाया जाता है या इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है। सो इट इज मोर बायो फ्रेंडली एंड बायो कंफर्टेबल। उसके बाद आया कार्बन फाइबर्स का, जो कार्बन फाइबर्स का बिकॉज इट इज ट्रांसलूसेंट, इट इज नॉट रेडियो ओपेक, so it is very useful in cancer patient, pathological fracture due to bone tumor, उसमें क्या
प्रोग्रेस है ट्यूमर का, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उससे रिग्रेशन हो रहा है कि नहीं, चारों तरफ ट्यूमर के हम लोग देख सकते हैं। और फ्रैक्चर का कैलस बन रहा है कि नहीं ये भी देख सकते हैं, क्योंकि ये रेडियो ट्रांसमिशन होता है, रेडियो एक नहीं होता है और कोल्ड वेल्डिंग नहीं होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये स्क्रू को निकालना जो है आसान है और काफी जो बहुत हाई फैटिक स्ट्रेंथ होता है इसका, जो काफी ड्यूरेबल होता है और फ्रैक्चर हीलिंग तक ये टूटता नहीं है, इसमें कोरोजन नहीं होता है और कार्बन फाइबर्स में कोरोजन नहीं होता है और कैंसर पेशेंट में यूजफुल है और स्ट्रेस चेंजिंग नहीं होता है जो कि मेटल में होता है और वीक कैलस बनता है, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग कैलस बनता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको बेंड नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन के समय हम लोग प्लेट को बेंड करते हैं ताकि बोन का शेप ले ले, वो मैनुअली बेंड करते हैं तो उसको आप बेंड नहीं कर सकते हैं, ये टूट जाता है लेकिन बेंड नहीं होता है। सो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, I am Dr. RCT Ortho, orthopedic surgeon, Chhapra, Bihar. Today I will give a demo of PFA2 surgery for a osteoporotic patient. ये है मिस्टर प्रशांत कुमार जो असम से आए हैं। उनके दाहिने कूल्हे का एक्सरे पिक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी डिफॉर्म्ड हो गया है और एक दूसरे में चिपक गया है। कूल्हे का हड्डी कूल्हे का गोला कप में चिपक गया है और काफ़ी हड्डी बन गया है उनके। इसके कारण काफ़ी रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट में उनको हो रहा था, वे ठीक से बैठ भी नहीं पाते थे कुर्सी पर। ये है एक्सरे पिक्चर, जिन्हें टोटल कूल्हा उनका बदल दिया गया है ऑर्थो सर्जिकल केयर सेंटर में। और 10 दिन के बाद वो वॉकर पे चल रहे हैं और फिर सीढ़ियों से उतर रहे हैं। इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि उतरते समय पहले प्रेशर वाले पैर कूल्हा को बदला गया है, उसको पैर रखना, उस पैर को रखना है, उसके बाद अच्छे पैर को रखना है और चढ़ते समय पहले अच्छे पैर को ऊपर रखना है, उसके बाद जिसमें कूल्हा को बदला गया है उसको रखना है। ये अब ऑपरेशन के बाद एक कुर्सी पर बैठ सकते हैं, इवन लो चेयर्स पे भी बैठ सकते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल और पेनलेस मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट आप देख सकते हैं किस तरह से खुद खड़े हो जा रहे हैं और लो चेयर पर भी आराम से बैठ जा रहे हैं। ये बिना सहारा के 10वें दिन बिना दर्द के चल पा रहे हैं। ये फ्रैक्चर है टिबिया का, कई भागों में विभक्त है और इसे डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक ऑफ सुप्रापेटनल नेलिंग ऑफ टिबिया के द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है
इस वीडियो में देख सकते हैं कि गाइड वायर को डाला जा रहा है और गाइड वायर फ्रैक्चर रिडक्शन के बाद परक्यूटेनियस फोर्सेप्स के द्वारा बिना चीरा लगाए रिडक्शन फोर्सेप्स के द्वारा उसे रिड्यूस किया जा रहा है। और रिडक्शन के बाद मैल्लेबल गाइड वायर को सीआर के मदद से डाला जा रहा है और उसके बाद उसे मेडुलरी कैनाल को रीम किया जा रहा है और रीम करने के बाद नेल को गाइड वायर के सहारे सीआर के मदद से फ्रैक्चर को रिड्यूस पोजीशन में रखते हुए नेल को डाला जा रहा है। एक उचित साइज के नेल को सेलेक्ट करने के बाद उसे डाला जा रहा है। फ्रैक्चर रिडक्शन परक्यूटेनियस रिडक्शन फोर्सेप्स के द्वारा किया गया है। और अब नेल को डाला जा रहा है। अब नेल को फाइनली लोअर एंड ऑफ द मेडुलरी कैनाल डालने के बाद उसे अपर फ्रैगमेंट और लोअर फ्रैगमेंट को लॉक किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रैक्चर का रिडक्शन हुआ है। ये है आरसीटी नेल इंट्रोड्यूसर कंपोजिशनर, जिसके द्वारा नेल को डाला गया है और अपर और लोअर फ्रैगमेंट दोनों को फ्री हैंड टेक्निक से सी आर्म के मदद से गोल करने के बाद होल को करने के बाद इस तरह से सी आर्म को एडजस्ट किया जाता है कि होल गोल दिखे और उसके बाद उसे ड्रिल करने के बाद उचित साइज का स्क्रू डाला जाता है। देखिए बिल्कुल गोल दिख रहा है अपर फ्रैगमेंट का दोनों होल और उसके बाद स्क्रू डाला गया है। गोल दिख रहा है, स्क्रू डाला जा रहा है, अपर फ्रैगमेंट के लोअर होल में डाला जा रहा है। फाइनली दोनों स्क्रू को उचित साइज के स्क्रू को अपर फ्रैगमेंट में लॉक कर दिया गया है नेल को और अब लोअर फ्रैगमेंट के एंट्रोपोस्टेरियर जो होल है उसको गोल किया गया है। इस तरह से सी आर्म को एडजस्ट किया जाता है कि वो गोल दिखे और एंट्रोपोस्टेरियर स्क्रू को डाल दिया गया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और देखिए अब मेडियोलैटरल होल है वो गोल कर दिया गया है। इस तरह से सी आर्म को एडजस्ट किया गया है और अब मेडियोलैटरल स्क्रू को भी डाला जा रहा है। ये मेडियोलैटरल स्क्रू डाल दिया गया है और एक लंबा सा स्क्रू जो आप देख रहे हैं वो एंट्रोमेडियल स्क्रू है। ये तीनों स्क्रू
लोअर फ्रैगमेंट में दिख रहे हैं। इस तरह से लॉक किया गया है बिना चीरा लगाए, छोटा छोटा चीरा जस्ट स्क्रू घुसाने के लिए रॉड में। और ये फ्रैगमेंट फ्रैक्चर है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रिडक्शन हुआ है। 3 भाग में टूटा हुआ था। ये 3 लोअर फ्रैगमेंट का स्क्रू है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपर फ्रैगमेंट का स्क्रू है। ये RCT नेल इंट्रोड्यूसर कंपोजिशनर के द्वारा डाला। Provides stable fixation and earlier mobilization and reduces the risk of non-union and malunion. Hence, is less invasive, resulting in smaller incision. Conducted a study between March 2020 to March 2025 on 25 cases of the displaced fracture of the clavicle. The age of the patient was 16 to 48 years, and no comorbidity was found in our study group. All patients treated with titanium elastic nail. So the road traffic accident was the main mode of the trauma, whereas the fall from height and the fall on the outstretched hand was the other mode of the. आज मैं आपको इंट्रामेडुलरी नेलिंग ऑफ लॉन्ग बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी के इतिहास के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैक्सिको में 16वीं शताब्दी में रेसिनस वुड यानी कि लकड़ी का उपयोग इंट्रामेडुलरी कैनाल में डालने के लिए होता था ताकि हड्डी का जुटान हो जाए, लेकिन उसे असफल होना ही था। कीटाणु संक्रमण के कारण वो असफल हो गया। उसके बाद आइवरी हाथी दांत का उपयोग होता था, क्योंकि उसका रंग उस आदमी के हड्डी से मिलता जुलता था। तो ऐसा विश्वास था लोगों का कि 18वीं शताब्दी में ऐसा विश्वास था कि बायो फ्रेंडली और बायो कंफर्टेबल होगा, तो हड्डी के आदमी के हड्डी के साथ घुल मिल जाएगा। 1939 to 1940 में असली क्रांति इंट्रामेडुलरी नेलिंग के क्षेत्र में हुआ। जब कुंसर ने, जर्मनी का सर्जन था, उसने सबसे पहले कुंसर नेल बनाया और इसे के नेल भी कहते हैं। ये के नेल है, देखिए ये निकालने के लिए ऊपर में एक छेद है और इसमें निकालने वाला औजार को फंसा करके निकालते हैं और डालने के लिए इसको अपर एंड ऑफ द फीमर से डालते हैं। 1939 to 40 में इस नेल का उपयोग सेकेंड वर्ल्ड वार में सैनिकों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जल्दी से जल्दी उपयोग किया जाता था। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में थॉमस नेल और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था, जिससे बहुत दिन तक मरीज को, सैनिकों को बेड रिडन रहना पड़ता था और बेड सोर और निमोनिया, किडनी फेल्योर और पल्मोनरी इम्बोलिज्म का चांस रहता था। और इस नेल के आने से सेकेंड वर्ल्ड वार में जो सैनिक विभिन्न देशों से जर्मनी गए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग लेने के लिए, वे अपने अपने देश लौटे तो उनके देश में देखा गया कि इस नेल का उपयोग कुंसर ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, और जल्दी से जल्दी मरीज उसमें खड़ा हो जाता था और चलने फिरने लगता था और ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता था और हड्डी भी जल्दी जुड़ती थी। लेकिन यह लॉ नहीं था। तो 1950 में ही कुंसर ने ही ये आइडिया दिया था कि अगर ऊपर नीचे इसको लॉक कर दिया जाए तो रोटेशन नहीं होता है। ये रोटेशन हो रहा है, ये घूम रहा है अगल बगल और ऊपर नीचे भी नहीं जाएगा, तो ज्यादा रिजिड और स्टेबल फिक्सेशन होगा। तो 1950 में आइडिया कुंसर ने ही दिया था और इस नेल को भी सेपरेट होता है और क्लोवर लीफ सेपरेट होता है। उसके
उसके बाद बीच में 1950 में रिमिंग का कॉन्सेप्ट आया, ताकि कॉन्टैक्ट एरिया जो इंट्रामेडुलरी कैनाल का है और नेल से ज्यादा कॉन्टैक्ट हो और मोटा नेल डाला जा सके, ताकि ज्यादा रिजिड और स्टेबल फिक्सेशन हो सके और जल्दी से जल्दी मरीज को हम लोग चला सके। तो ये कॉन्सेप्ट था 1950 में। और 1970 में ग्रॉस एंड केम्प ग्रॉस एंड केम्प ने सॉलिड नेल को इंटरलॉकिंग नेल का इंट्रापेटलर रूप से करने का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ लॉक कर दिया जाता है। और हालांकि ये कॉन्सेप्ट 1950 में उनसर नहीं दिया था, जिसे डिटेंशन बोर्ड टूल ने कहा, और बाद में 1970 में ग्रॉस एंड केम्प ने इसको स्पेशल जिग बनाया, जिसके थ्रू अपर फ्रैगमेंट और लोअर फ्रैगमेंट में दो बोल्ट स्टैटिक और डायनेमिक लॉकिंग का कॉन्सेप्ट भी ग्रॉस एंड केम्प ने दिया। और मॉडर्न युग जो है बहुत दिन तक 1990 तक ये इंट्रापेटलर रूप से इस नेल को डाला जाता था टिबिया फ्रैक्चर में। तो उसके बाद फीमर फ्रैक्चर में भी इसको डाला जाता था। ये फीमर नेल है, दो ऊपर छेद है और दो नीचे छेद है। इसको भी जिग के थ्रू लॉक किया जाता था। बाद में देखा गया कि नीचे के छेद लॉक करने में परेशानी आती थी, इसलिए फ्री हैंड टेक्निक से आजकल डिजिटल लॉकिंग किया जाता है। सो ये फीमर नेल है और ये टिबिया नेल है, तो आजकल इंट्रापेटलर रूप से यूज किया जाता है। इसे सुप्रापेटलर रूप से यूज कर सकते हैं। तो अपर फोर्थ ऑफ द टिबिया फ्रैक्चर में इंट्रापेटलर रूट से करने से 90 डिग्री फ्लेक्शन ऑफ द नी करना पड़ता है। तो इसलिए 90 डिग्री फ्लेक्शन करने से प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट का एंटीरियर एंगुलर डिफॉर्मिटी बढ़ जाता है ड्यू टू पुल ऑफ द पैटेला। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, पुल ऑफ पैटेला को न्यूट्रलाइज करने के लिए सुप्रापेटलर नेलिंग का कॉन्सेप्ट आया, जिससे 1996 में टोर्नेटा एंड कोलिंस ने ये कॉन्सेप्ट किया, सेमी एक्सटेंडेड पोजीशन ऑफ द नी में नी के द्वारा अगर नेलिंग किया जाए सुप्रापेटलर नेल रूट से, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 90 डिग्री फ्लेक्शन करने के कारण इंट्रापेटलर रूट के द्वारा नेलिंग करने में उसे रोका जा सकता है, क्योंकि वो पैटलर पुल जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है सेमी एक्सटेंडेड पोजीशन में रखने से। तो फर्स्ट टाइम टोर्नेटा 2 एंड कोलिंस ने ये कॉन्सेप्ट किया। बाद में 2012 में एओ ग्रुप ने जॉनसन एंड जॉनसन के साथ मिल करके सुप्रापेटलर नेलिंग का जो डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट सेट बनाया, जिग और प्रोटेक्टिव स्लीव, जो कि इंट्राआर्टिकुलर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, और उसी के थ्रू रिमिंग, गाइड वायर और नेल को डाला जाता है ताकि इंट्राआर्टिकुलर स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हो। तो डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट बनाया एओ ग्रुप ने, जिसे जॉनसन एंड जॉनसन, स्मिथ एंड नेफ्यू ने बनाया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह होता था कि ये काफी महंगा था, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती थी और 35 से 40 लाख का इंस्ट्रूमेंट सेट आता था और 35 से 40 हजार का इम्प्लांट का खर्च पड़ता था। तो गरीब मरीजों के लिए छोटे छोटे नर्सिंग होम में इसे यूज
यूज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसका कॉस्ट जो है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाले ही दिया कर सकते थे। इवन सरकारी हॉस्पिटल में भी, छोटे छोटे हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसे नहीं किया जा सकता था, क्योंकि एक ऑपरेशन के लिए उतना सरकार भी खर्च वहन नहीं कर सकती है, उतना महंगा इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद डॉक्टर RC ठाकुर ने डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक को इनोवेट किया, जिसमें फ्री हैंड टेक्निक से अपर एंड लोअर लॉकिंग किया जाता है और जिग का उपयोग नहीं किया जाता है। और PFN A2 सेट से ड्रॉपर एंड प्रोटेक्टिव स्लिप को यूज किया जाता था, क्योंकि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट सेट का लंबाई चौड़ाई, जो ड्रॉपर एंड प्रोटेक्टिव स्लिप यूज किया जाता है, तो उसका लंबाई चौड़ाई और उसका डायमीटर जो होल होता है उसको डालने के लिए, रिंग करने के लिए, सो सेम ही था। तो उसको PFN A2 सेट का ड्रॉपर एंड प्रोटेक्टिव स्लिप यूज किया और एक कॉलर कोडेड टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर, टिबियल इंट्रापेटलर रूट का टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर है, जिसे कलर कोडिंग कर दिया गया। इसका 4 फेस है, अपर एंड में 4 फेस है, जिसमें A, B, C, D लिखा गया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें आप अपने स्टाफ का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मोहन, सोहन, राम, श्याम, कुछ भी लिख सकते हैं। या इसमें हमने A, B, C, D लिखा। अगर A जो है, अगर नेल को कसने के बाद, इसमें कलर कोडेड टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर को कसने के बाद अगर एज कंसाइड करता है इंटीरियर सरफेस ऑफ द नेल से, तो थ्रू आउट द नेलिंग प्रोसेस एक कंसाइड करेगा इंटीरियर सरफेस ऑफ द नेल से, और C और D कंसाइड करेगा लैटरल एंड रेडियल सरफेस से, और D जो है वो पोस्टीरियर सरफेस पे जाएगा। तो इस तरह से ये रिलेशन बना रहता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट सेट का कॉस्ट 0 हो जाता है और नेल वही रहता है जो उनका पर्टिकुलर रूप से डाला जाता है। अतः यह बहुत कम खर्च में हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट सेट का खर्च 0 और 2000 से 5000 तक जो इंस्ट्रूमेंट नेल और स्क्रू का खर्च पड़ता है। तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। और बाद में कुछ परेशानी आया नेल को डालने के प्रॉपर पोजीशन में, तो RCT ने इंट्रोड्यूसर कंपोजिशनर को बनाया गया, जिसमें नेल को डायरेक्ट कस किया जाता है और इसमें लॉक हो जाता है, और लॉक करने के बाद जो है इसको नेल को डालते हैं। अपर लेवल ऑफ द कॉलर कोडिंग किया जाता है, और इसमें एक बीच में इंस्ट्रूमेंट के बीच में RCT ने इंट्रोड्यूसर कंपोजिशनर में सेंटर में एक होल होता है, जिसमें टॉमी बार लगा करके नेल को पोजीशन में रखते हैं। जब हम हैमर करते हैं तो धीरे धीरे नेल रोटेट करता है, आइदर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो इसको डिरोटेट करके प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं और उसके बाद नेल को अंदर डाल देते हैं। टिल लास्ट एंड ऑफ द नेल seated in proper position, this can be derotated in proper position. So ये है इतिहास नेलिंग का, के नेल से लेकर सुप्रापेटलर नेलिंग तक। So thank you very much for patient hearing of history। बहुत ही रोचक हिस्ट्री है इंटरलॉकिंग नेलिंग का। So के नेल टू डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक ऑफ सुप्रापेटलर नेलिंग ऑफ इंडिया, ये इतिहास है नेलिंग का। धन्यवाद। The number one myth is interlocking nailing of
humerus will severely impair the shoulder function due to rotator cuff damage. The reality is, with proper technique and entry point, the rotator cuff damage can be minimized and shoulder function can be preserved. So the myth number 2 is there is always chance of radial nerve injury, as it is a complication for the interlocking netting of humerus. And it is not a complication for the open reduction and internal fixation for plating. So it is, yes, it is, there is risk of radial nerve injury when the fracture is at the spiral root. There is chance of the radial nerve injury, but in the rest of the part, if the fracture is in the rest of the part of the humerus, there is minimum chance of the radial nerve injury when the instruments like the guide wire, remote, and the nail is introduced after proper reduction of the fracture in the distal fragment. Both AP and lateral view, the fracture is reduced properly. Only then these instruments are introduced inside the distal fragment. And don't allow your instrument to wander inside the soft tissue. So these are the two myths which is associated with interlocking netting of humerus, and other two controversies whether which position of the patient should be used for the interlocking netting of humerus. There are three positions. Number 1, supine position. When it is used, it is comfortable for the anesthesia point of view as well as the surgeons. But the distal locking, which is done by freehand technique, is slightly difficult and tricky because the anterior surface of the distal part of the humerus is triangular. So finding the entry point for the distal locking is slightly difficult because slipping of the drill bit or TY. So it should be at angle, it should be introduced at angle, and then it should be kept in a straight line. So this is the disadvantage of supine position, and in lateral position as well as the prone position, the distal locking is done from the posterior surface, which is flat. So the entry hole, finding the entry point for the distal locking is easy because the surface is the flat, but it is uncomfortable position for anesthesia point of view, and the surgeons, it depends on the surgeon's choice. So I do use supine position for all my interlocking netting. Number 3 controversy is because it is non-weight bearing bone, so one screw distal and one screw proximal is sufficient. But I use 2 screw distal and 2 screw proximal because the 2 is always better than 1, always stronger than 1. If it is just like the 2 kidney present in human body, if one fails, others start working. So, and 2 engines in the aeroplane, one engine fails, the other start working automatically. So, if one screw is not working, then the other screw will do its work. So, the fixation is better by 2 screw proximal and 2 screw distal. So, friends, these are the advantages of interlocking netting over the plating of the humerus, and these are the myths, and these are the controversies whether 2 screws should be put proximal as well as the distal, what position.
should be used in this talk, and let us get tuned for the next video and subscribe my channel for more update on orthopedic surgery and insight. The supine position of the patient